Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, in today's video we will start reading with our chapter number 10 from the book Footprints Without Feet, and this is the last chapter from this book, okay? And the name of the chapter is The Book That Saved the Earth, okay? And this chapter is written by Claire Boyko. So she is the writer, or we can say she is the author of this chapter, okay? So students, the chapter The Book That Saved the Earth, it is written in the form of a play, okay? So what is a play? Let's understand that first. So students, play is a form of writing, or we can say play is that form of literature that is written to be performed on the stage, okay? So always plays, they have this purpose कि उनको stage पे perform किया जाएगा, okay? So when they are performed on the stage, then obviously they have some characters, okay? And they have some dialogues, okay? So all the characters, okay, they speak some other dialogue with each other, okay? So this way they communicate with each other, okay? So I am very much sure आप सब ने प्ले देखे होंगे अपने स्कूल्स में, स्टेज पे परफॉर्म होते हैं प्ले, इस तरह से इसको लिखा जाता है, okay? So this chapter, it is a very fine example of play. So let's start reading our chapter, okay? Before you read, so before starting reading the play, reading the chapter, let's get some idea. Mother Goose is a well-known book of nursery rhymes in English, okay? So in English language there is one book that is very famous. The name of the book is Mother Goose, okay? And this book is about nursery rhymes, okay? So जो बच्चों की nursery rhymes होती हैं वो इस book में है. It is a really very popular book, okay? Do you think such a book can save planet Earth from a Martian invasion, okay? So now the question is that what do we think? हमें क्या लगता है कि ये जो book है, राइट, और बुक भी कैसी जिसमें नर्सरी राइम्स है, ओके? सो क्या ये बुक हमारे जो प्लैनेट अर्थ है, राइट, उसे बचा सकती है किससे? मार्शियन इन्वेशन से. इन्वेशन मीन्स अटैक, ओके? सो जो मार्स प्लैनेट है, राइट, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं दे आर नोन एज मार्शियन. सो उन्होंने एक बार प्लैनेट अर्थ पे अटैक किया था, ओके? और वो जो अटैक था उससे हमारी जो मदर अर्थ थी वो बच पाई थी. वाई? बिकॉज ऑफ दिस बुक दैट इज मदर गूज, ओके? Read this play set 4 centuries in the future and find out, okay? So this is the question and the answer we have to find out when we will read this play. And what is the most important thing about this play, that this play is set 4 centuries in the future, okay? So this is a futuristic play, right? इसमें जो setting है, जो time है, that that is from the future, right? So future में इस play को लिखा गया है, जिसकी entire setting है वो future की है, right? So it is a futuristic play and we will find the answer of this question when we will read the play or our chapter, okay? So let's start. Characters, okay? So as I have told you earlier that in all the plays there are some characters, okay? So let's see the characters of this play. So in this play में कौन-कौन से character हैं? First of all there is historian, okay? Then there is great and mighty think tank, okay? So the name of the character is think tank, okay? But he has these adjectives great and mighty, okay? Next character is apprentice Noodle, okay? So the name of the character is Noodle, but he is one of the apprentice. Apprentice means trainee, okay? Next is Captain Omega, right? Next character is Lieutenant Iota. Next one is Sergeant Oop, and there is one of stage voice, okay? So these are the characters of this play, right? So let's start reading our play. First of all time, okay? So इस play का जो background में जो time है, right, जो time setting है वो कब की है? The 25th century, right? So as we have read earlier in the introduction of the play कि this is a futuristic play, right? So जो time setting है that is from 25th century, right? So now we can imagine कि कितना ज़्यादा future में play क्यों लिखा गया है, okay? Right now it's 20th century और इसको लिखा गया है 25th century में, okay? Place the Museum of Ancient History Department of the 20th century on the planet Earth, okay? And what is the place? जो इस background में, इस play के background में जो place है वो क्या है? That is the Museum of Ancient History, okay? And it was one of the department of the 20th century and where on the planet Earth, okay? So this is the place and this is the time, that is 25th century, okay? Before rise, okay? So let's see.
Spotlight shines on historian who is sitting at a table down right on which is a movie projector. Okay, so as we have read in the characters that there is one character historian. So ये जो character है historian, right, उसके ऊपर जो spotlights है, right, so हम सब ने देखा है जो plays होते हैं, जो stage होता है उस पर spotlight जो होती है, जो जिस टाइम जो character जो dialogue बोल रहा होता है या जिस character को सब audience को दिखाना होता है, so उसके ऊपर spotlight जो होती है वो उसके ऊपर रहती है. So now the spotlight shines on historian. Okay, and this historian, she is sitting at a table down right, okay, on which is a movie projector, and on that table there is one movie projector. Okay, a sign on an easel beside her reads. Okay, so she is sitting on a chair with a table, and on that table there is one, we can say, movie projector. Okay, and beside her there is one easel. Okay, so what is easel? Easel means a wooden frame. Okay, and in this picture we can see this is known as easel. Okay, so this frame with this paper, okay, so this frame is known as easel. So this kind of frame was there beside her, and the paper that was there on that easel, so उस पेपर पे क्या लिखा गया था? उस पेपर पे लिखा हुआ था म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th century. Okay, so this was written on that paper that was there on the easel. Okay, she stands and bows to audience. Okay, so now this character historian, she stands and then she bows to audience, right? Historian. Okay, so now this character historian, she is saying, good afternoon, welcome to our museum of ancient history and to my department, curiosities of the good old far off 20th century. Okay, so now she is addressing to all the audience and she is saying good afternoon, and next she is welcoming all the audience to the museum. Okay, and she is saying welcome to our museum of ancient history, okay, and to my department. Okay, so she was working, or we can say she was the head of this department, curiosities of the good old, okay, far off 20th century, right? So now she is saying that there are so many curiosities about what was 20th century was like, उस समय लोग कैसे रहा करते थे, because we have read कि अभी टाइम कौन सा है, it is 25th century. Okay, the 20th century was often called the era of the book. Okay, now next she is saying कि जो 20th century है, right, उसको किस तरह से जाना जाता है, it is called like the era of the book, right? So जो 20th century है, that is known as the era of the book. Okay, so after reading this हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में जब 25th century आएगी, मे बी तब बुक्स नहीं होंगी, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जो हमारी पेपर बुक्स होती हैं, वो मे बी फ्यूचर में नहीं है. ओके, और ये जो टाइम है 25th century, इस समय बुक्स नहीं है. ओके, दैट्स वाई दे आर सेइंग दैट जो 20th century थी, that is known as the era of the books. Okay, next she is saying in those days there were books about everything from ant-eaters to Zulus. Okay, so next she is saying that in the 20th century, okay, there were so many books and those books were each and about on every topic, right? जितने भी topics होते हैं, सभी topic और we can say सभी subjects से related books रहती थी. Okay, next she is giving some examples and she is saying there were books from ant-eaters to Zulus. Okay, ant-eaters means a mammal that feeds on ants. Okay, and Zulus is one of South African tribe. Okay, so in this picture we can see ये जो tribe होती है, this tribe is known as Zulus. Okay, so that character historian, she is saying that in the 20th century, right, there were so many books that we can find books on each and every subject, each and every topic. Okay, so there were books from ant-eaters to Zulus. Okay, books taught people how to and when to and where to and why to. Okay, so next she is adding that in 20th century books were having such an important role. Okay, that जो books थी, they were always there to teach the people. Okay, they were always there कि वो हमेशा उनको बताया करती थी, उनको हमेशा गाइड किया करती थी, हमेशा उन्हें टीच किया करती थी, राइट? क्या क्या चीज़ें, that how to do anything और when to perform and where to do and why to, right? So books जो थी, all the books have each and every solution. जितनी भी problems हुआ करती थी, जितनी भी difficulties होती थी human beings की life में, so books were used to have all the solution, right? And they used to teach, they used to guide all the people. Okay,
They illustrated, educated, punctuated and even decorated. Okay, next she is saying that books was so important at that time that they used to illustrate means to give detailed information. Okay, so जिस जो टॉपिक के बारे में भी और वी कैन से जिस सब्जेक्ट के बारे में भी अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी, कुछ नॉलेज हमें लेना होता था, सो हम किसकी हेल्प लेते थे? ऑब्वियसली बुक्स की लेते थे. सो बुक्स वर देयर टू इलस्ट्रेट ईच एंड एवरीथिंग, बुक्स वर देयर टू एजुकेट द पीपल, books were there to punctuate the people and even books were used to decorate. Okay, so these all were the purpose of the book, that why books were used in 20th century. Okay, and that's why 20th century was known as an era of the books. Okay, but the strangest thing a book ever did was to save the earth. Okay, now historian is coming to the point and she is saying that although books were used for many purpose and they were having a lot of information and they used to guide, they used to teach, but the most important thing, or we can say the most strange thing that a book ever did was, and what was it? It was to save the earth. Okay, so books जो थी वो इतने सारे purpose, इतने सारे role तो play किया करती थी, but what was the strangest thing, the strangest, so we can say the most important thing was that once ये जो book है, this book saved this planet earth. Okay, you haven't heard about the Martian invention of 2040. Okay, next she is saying that वो अपने ऑडियंस से बात कर रही है और वो ऑडियंस से कह रही है that I am sure कि आप सबने सुना नहीं होगा उस मार्शियन इन्वेंशन के बारे में, राइट? जब मार्स पे रहने वाले जो लोग हैं, राइट, उन्होंने इस प्लैनेट अर्थ पे अटैक किया था और ये जो इंसिडेंट है कब हुआ था? इट टू हैपन इन 2040, राइट? Next she is making some kind of sound. Okay, and this is okay, and this sound represents some kinds of disapproval. Okay, next she is saying what do they teach children nowadays? Okay, so now she is having one question and she is saying that nowadays means which century? It is 25th century, very the time that was in the future. Okay, so she is saying that अब के टाइम में जो बुक्स हैं वो हमारे टाइम के जो चिल्ड्रन हैं उनको बुक्स क्या पढ़ा सकती हैं, क्या उनको वो सिखाती हैं. ओके, well the invention never really happened because a single book stopped it. Okay, next she is saying कि जो invention है, जो मार्शियन अटैक होने वाला था, वो अटैक, वो इन्वेंशन एक्चुअल में होता नहीं है, वो हो नहीं पाता. जो मार्शियन जो पीपल थे, राइट, दे वर प्लानिंग फॉर दिस अटैक, पर फाइनली ये अटैक हो नहीं पाता. वाई? बिकॉज देयर वॉज वन बुक एंड दैट सिंगल बुक स्टॉप्ड दैट अटैक. ओके, now I am very much sure that you all must be very curious, very eager to know, right, that how is it possible that अगर मार्शियन लोगों ने कुछ अटैक प्लान किया है, right, they are planning to attack mother earth, or we can say planet earth. Okay, so how is it possible that one single book is able to stop that attack? Okay, so this is a mystery and we will solve this mystery when we will continue the play. Okay, so let's see what was the book, you ask. Okay, so now historian, she is again addressing all the audience and she is saying that now I am sure your question will be that what was the book, ये कौन सी बुक थी जो कि जिसने इतने बड़े अटैक को रोक दिया. ओके, सो ये जो क्वेश्चन है ये आप सब के माइंड में होगा. अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया. नेक्स्ट जो हिस्टोरियन है वो आंसर दे रही है एंड शी इज सेइंग कि आप सब गैस कर रहे होंगे कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होगी, कोई बहुत ही बड़ी सी बुक होगी, मे बी वो कोई एनसाइक्लोपीडिया हो. ओके, सो व्हाट इज एनसाइक्लोपीडिया? एनसाइक्लोपीडिया इज अ बुक, ओके, गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन मैनी एस्पेक्ट. ओके, सो एनसाइक्लोपीडिया जो होती है वो एक्चुअली में बहुत ही ह्यूज बुक होती है जिसपे वी कैन फाइंड ऑल द टॉपिक्स, जो सभी सब्जेक्ट्स को, सभी टॉपिक्स को कवर करती है, हर तरह की इंफॉर्मेशन देती है. ओके, अ टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स. नेक्स्ट शी इज सेइंग, हिस्टोरियन इज सेइंग कि मे बी आपके माइंड में ये गैस होगा कि वो कोई टॉम होगी. टॉम मीन्स अ वेरी लार्ज, और वी कैन से अ वेरी ह्यूज बुक, ओके, दैट इज रिलेटेड विथ रॉकेट्स और मिसाइल्स. ओके, अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस. और मे बी आप सब ये सोच रहे होंगे कि वो कोई सीक्रेट फाइल होगी, कोई ऐसी चीज़ हो गई जो कि आउटर स्पेस से रिलेटेड होगी, वो हमारे जो अर्थ के लोग हैं उनके पास वो आ गई होगी वो फाइल, और किसी तरह से उस फाइल की हेल्प से उस अटैक को बचा लिया होगा. नो, इट वॉज नन ऑफ दोज. बट नाउ हिस्टोरियन, शी इज क्लियरिंग ऑल द डाउट्स, ऑल द गैसेस एंड शी इज सेइंग दैट नो, इनमें से कोई भी बुक वो नहीं थी
थी, इट वॉज नीदर एनसाइक्लोपीडिया नोर इट वॉज सम काइंड ऑफ सीक्रेट फाइल. ओके, it was, but here let me turn on the historiscope and show you what happened many centuries ago in 2040. Okay, so next she is clearing all the doubts and she is saying that यानी वो बुक कौन सी थी, so उसको बताने के लिए वो कह रही है that let me turn on the historiscope. Okay, so what is historiscope? In this picture we can say this is a kind of historiscope, right? So जितनी भी history से related चीज़ें होती हैं वो इसमें सेव रहती हैं and it works like a projector. Okay, so she is turning on one kind of historiscope and she is saying that let me show you what happened many centuries ago in 2040. Okay, so this was the year that we have read earlier जब ये Martian attack plan हुआ था. Okay, she turns on projector and points it left. Okay, so अब जो projector है उसके पास में उसे वो turn on कर देती है and then she points it left. Okay, spotlight on historian goes out and comes up down left to think tank who is seated on a raised box arms folded. Okay, और जैसे ये प्रोजेक्टर ऑन होता है तो अब तक जो स्पॉटलाइट थी वो कहाँ थी, हिस्टोरियन के ऊपर थी, राइट? अब हिस्टोरियन के ऊपर से जो स्पॉटलाइट है वो बंद हो जाती है एंड नाउ स्पॉटलाइट वाज देयर ऑन थिंक टैंक. ओके, एंड थिंक टैंक we have read earlier, it is one of the character from the play and this person think tank he is seated on a raised box. Okay, and उसके जो arms हैं they are folded, right? He has a huge egg-shaped head and he wears a long robe decorated with stars and circles. Okay, जो person है think tank. Okay, so what is his appearance, वो कैसा लग रहा है? So he has a huge egg-shaped head, right? उसका जो head है, right, वो कैसा है? It is very huge and it is almost egg-shaped, right? So in this picture we can see जो head है ये कैसा है, बिल्कुल egg-shaped का वो head है. Okay, and he wears a long robe. Okay, और उसने क्या पहना हुआ है? He is wearing a very long robe. Okay, so what is robe? In this picture we can see पुराने टाइम में जो kings होते थे, हम सब ने मूवीज़ में देखा है, टीवी में देखा है, जो king हुआ करते थे they used to wear such kind of robes. Okay, so उसने भी एक ऐसा long robe पहना है and that robe is decorated with stars and circles. Okay, so this is the appearance of this person think tank. Okay, apprentice Noodle stands beside him at an elaborate switchboard. Okay, so जो think tank है उसके पास में ही एक और कैरेक्टर है हमारे प्ले का and that character is Noodle. Okay, and he is apprentice. Apprentice means trainee. Okay, so वो trainee है वहाँ पे and he is there standing beside think tank. Okay, at an elaborate switchboard. Okay, और वहाँ पे एक switchboard भी है, बहुत elaborate, बहुत huge, बहुत big switchboard है, right? A sign on an easel reads. Okay, so एक बार फिर से वो जो easel है, वो जो wooden frame होता है, फिर से उस पे एक और sign है, Mars Space Control. Okay, great and mighty think tank commander in chief. Okay, bow low before entering. Okay, so what was there? There was written great and mighty think tank. Okay, so who is think tank? He is the commander in chief. Okay, and there was written bow low before entering. Okay, so think tank he was there at Mars Space Control. Okay, Noodle, then there was Noodle and he was saying Boeing. Okay, and what did he say? He said, oh great and mighty think tank, most powerful and intelligent creature in the whole universe, what are your orders? Okay, so many adjectives he used to address think tank. Okay, so he is saying, oh great and mighty think tank. Okay, next he is adding some more adjectives and he is saying most powerful and intelligent creature in the whole universe. Okay, and then he was asking that what are your orders? Okay, so we can say that think tank he is so प्राउडी. ओके, बिकॉज उसने इतने सारे एडजेक्टिव्स जो थे वो अपने एड्रेस में इंक्लूड किए थे, इन्वॉल्व किए थे और उसने क्लियरली लिख रखा था दैट बो लो बिफोर एंटरिंग. ओके, सो थिंक टैंक ही इज़ रियली वेरी प्राउडी, वेरी इगोइस्टिक पर्सन. ओके, think tank. Okay, so now this character think tank he is speaking previously means irritably. Okay, so he is very irritated, he is very, we can say he is very angry and he is saying you left out part of my solution, apprentice Noodle. Okay, so he is not happy, right? उसने जो भी इतने सारे adjective use किए थे उन adjective से भी जो character है think tank he is not happy. Why? Because he is saying that he left out part of his salutation. Salutation means greet, right? जिस तरह से उसने
ग्रीट किया था, जो एडजेक्टिव्स यूज़ किए थे उसमें से और भी एडजेक्टिव थे जो कि इसने मिस कर दिए थे, राइट। सो जो थिंक टैंक को जब भी कोई एड्रेस करता है, ग्रीट करता है, तो उसे वो सारे एडजेक्टिव बोलने पड़ते हैं, पर जो ट्रेनी है नूडल, इसने कुछ एडजेक्टिव मिस कर दिए थे, इसने पूरा सैल्यूटेशन कंप्लीट नहीं बोला था, इसलिए जो थिंक टैंक है ही इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अनॉयड और वी कैन से ही इज़ अ लिटिल बिट ऑफ इरिटेटेड, ओके। गो ओवर द होल थिंग अगेन, दैट्स वाई ही ऑर्डर्स, ओके। ये वो नूडल को ऑर्डर देता है कि वो पूरा सैल्यूटेशन फिर से स्टार्ट करे, स्टार्टिंग से पूरा सैल्यूटेशन बोले, बिकॉज उसने एक छोटा सा पार्ट मिस कर दिया था, ओके। सो नाउ वी कैन सी कि जो पर्सन है थिंक टैंक, राइट, ही इज सो प्राउडी, राइट, वो कितना प्राउडी है, उसको अपने एडजेक्टिव सुनना कितना पसंद है, राइट। और इस पर्सन ने, नूडल ने थोड़ा सा कुछ पार्ट मिस कर दिया था, सो ही इज ऑर्डरिंग, राइट, टू रिपीट द एंटायर सैल्यूटेशन वन मोर टाइम, ओके। सो वी कैन सी दैट यस ही इज वेरी प्राउडी, ओके। Noodle, okay, so this time Noodle, he has to speak the entire salutation one more time, so he is saying it shall be done sir in a sing song, okay, so उसको order follow करनी है, and he is saying that sir okay I will do this, I will repeat the entire salutation one more time, okay, and now he is speaking in a sing song, okay, बिल्कुल एक जो rhyme होती है, जो एक rhythm होता है, right, उस तरह से उस tone में उसने बोलना स्टार्ट किया, and he is saying oh great and mighty think tank, ruler of Mars and her two moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe, out of breath, what are your orders, okay, so now this time Noodle, now he is ready with the entire salutation, और जो entire salutation है वो क्या है, so he is speaking in a very sing song rhythm, okay, so वो कह रहा है oh great and mighty think tank, ruler of Mars and her two moons, okay, so who is think tank, he is the ruler of Mars and her two moons, okay, so what are moons, we all know, like earth also has one moon, so इस तरह से जितने planets होते हैं they also have moons, okay, so he is saying ruler of Mars and her two moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe, okay। अब जब उसने इतना लंबा जो salutation है वो उसने बोला, so after that he was out of breath, right, so he was unable to breathe properly, and next he is saying what are your orders, okay। Think tank, that's better Noodle, okay, so this time this person think tank, he was happy because Noodle he completed the entire salutation, okay, so he is saying Noodle, now that's better, I wish to be placed in communication with our manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership, okay, so now think tank, now he is saying that what is his order, so he is saying that I just want to wish to be placed in communication with our manned space probe, okay, so what is space probe, in this picture we can see, right, ये जो spaceship होती हैं they are known as space probe, okay, so कोई space probe थी that was related with that planet Mars, जो कि Mars के लोगों की थी, right, इसमें वो Mars के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, so he is saying कि मुझे उस spaceship से और we can say उस space probe से communicate एक establish करना है to that ridiculous little planet, और ये जो space probe है ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है उस ridiculous little planet को कैप्चर करने के लिए, right, and ridiculous means absurd, okay, and which absurd ridiculous planet they are talking about, it is Earth, okay, so he is saying that I want to be in a communication with our Mars space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership, okay, so ये कह रहा है जिस planet को हम कैप्चर करने वाले हैं, जिस planet पे हम अपनी rulership establish करने वाले हैं, और वो भी कैसी generous, okay, so is trying to say कि जब हम अर्थ को कैप्चर कर लेंगे, so ये हमारी generosity है कि हम उस छोटे से ridiculous से planet पे अपना rulership हम establish कर रहे हैं, why, because we are so generous, okay, because हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं, तो अगर हम वहाँ पे अपना rule बनाएंगे, okay, so that will be good for all the people that are there on planet Earth, okay, so that's why he is trying to say, and he wanted to make one kind of communication with that spaceship, okay, और ये जो spaceship है ये कहाँ आ रहा है, ये planet Earth पे आ रहा है, उसको कैप्चर करने के लिए, उस पर अपनी रूलरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए, ओके। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, ओके, और वो नाम भूल चुका है इस प्लैनेट का, वो अर्थ का नाम भूल चुका है, दैट्स व्हाई ही इज एड्रेसिंग इट एज अ रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट, ओके, एंड नाउ ही इज आस्किंग दैट व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, नहीं सेइंग दैट प्लीज टेल मी वन मोर टाइम, नाम क्या है उस प्लैनेट का, उस
प्लैनेट को कहते क्या है? नूडल, अर्थ, योर इंटेलिजेंस. सो नूडल इज देयर टू आंसर एंड ही इज सेइंग दैट प्लैनेट इज नोन एज अर्थ. ओके. थिंक टैंक, अर्थ, ऑफ कोर्स. सो नाउ थिंक टैंक उसको याद आ जाता है, सो वो कहता है या ऑफ कोर्स इट इज़ अर्थ. ओके. यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, बट फर्स्ट समथिंग इम्पॉर्टेंट, माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर. ओके. सो वो कह रहा है या नाउ आई रिमेंबर इट इज़ प्लैनेट अर्थ. नेक्स्ट वो कह रहा है कि जो प्लैनेट है ये कितना अनइम्पॉर्टेंट है, इतना अनइम्पॉर्टेंट है कि इसका मुझे नाम तक भी याद नहीं रहता. ओके. नेक्स्ट ही इज सेइंग दैट बट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट काम मैं करना चाहता हूँ, एंड वो काम क्या है? माई मिरर. ओके. और वो क्या करना चाहता है? ही विश टू कंसल्ट हिज मिरर. राइट. उसको अपने मिरर से एक बार बात करनी है. कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने से पहले वो एक बार अपने मिरर से कंसल्ट करना चाहता है. ओके. Noodle, it shall be done, sir. So Noodle is there always to follow all the orders. So he is saying that okay sir, it shall be done. Okay. He hands think tank a mirror. Okay. So he is obeying all the orders and he is giving one mirror to this person, think tank. Okay. Think tank. So now think tank is having the mirror in his hand and he is saying, mirror, mirror in my hand, who is the most fantastically intellectually gifted being in the land? Okay. So now he is asking to that mirror. Okay. And he is saying, mirror, mirror in my hand, tell me who is the most fantastically intellectually gifted being in the land. Okay. So after listening this, I am very much sure आप सबको स्नो वाइट की स्टोरी याद आ रही है, द फेरी टेल ऑफ स्नो वाइट, जिसमें जो स्नो वाइट की स्टेप मदर होती है. राइट. शी यूज टू स्पीक दीज लाइन्स एज मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल. राइट. सो वो हमेशा इधर से मिरर से पूछा करती थी. सो उसी तरह से जो थिंक टैंक है, ही इज आस्किंग फ्रॉम दैट मिरर दैट ही इज होल्डिंग इन हिज हैंड. ओके. ऑफ स्टेज वॉइस. ओके. सो अब एक वॉइस सुनाई देती है ऑफ स्टेज से एंड दैट वॉइस सेड आफ्टर अ पॉज, यू सर. ओके. सो वॉइस क्या कहती है? द वॉइस इज सेइंग इट्स यू सर. थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर. ओके. बट थिंक टैंक इज नॉट हैप्पी. ही स्मैक्ड द मिरर. स्मैक मीन्स स्ट्राइक. ओके. एंड वाई ही इज नॉट हैप्पी? ही इज सेइंग क्विकर, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम. ओके. सो ही इज नॉट हैप्पी बिकॉज मिरर ने थोड़ा सा टाइम लिया आंसर देने में. Okay. So think tank he is saying that quicker, next time you have to answer quicker. Right. इतना टाइम नहीं लेना है, तुम्हें बहुत क्विकली आंसर देना है. Okay. I hate a slow mirror. Okay. So why he is so annoyed, why he is so upset? Because mirror ने बिल्कुल क्विकली आंसर नहीं दिया था. And think tank he is saying that he hates a slow mirror. Okay. He admires himself in the mirror. Okay. Now he is holding that mirror in his hand. Okay. And he is looking in that mirror and he is actually admiring himself. Okay. He is admiring his looks, his appearance. Okay. There I am. Are we Martians not a handsome race? Okay. So he is looking in the mirror and he is saying, here I am in this mirror. And next he is saying, हम जो मार्शियन हैं वो सबसे हैंडसम रेस है. हम जो मार्शियन हैं, हम जो मार्स से बिलोंग करने वाले लोग हैं. राइट. हम सबसे हैंडसम लोग हैं इस एंटायर यूनिवर्स में. राइट. सो वन मोर टाइम वी कैन से दैट यस ही इज वेरी मच प्राउडी एंड इगोइस्टिक. ओके. so much more attractive than those ugly earthlings with their tiny heads. Okay. Now next he is having one comparison. Okay. और वो कह रहा है कि हम earthling से, earthling means people जो अर्थ पे रहते हैं. राइट. सो वो कह रहा है हम जो मार्शियंस हैं हम earthling से तो बहुत ज़्यादा बेटर हैं. वाई? बिकॉज जो earthlings हैं उनके जो हेड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही टाइनी होते हैं. राइट. सो ऑब्वियसली हमारे जो हेड हैं वो जो थिंक टैंक का हेड हमने अभी पिक्चर में भी देखा है जो बिल्कुल एग शेप का होता है. राइट. उसके कंपैरेटिवली बहुत टाइनी है. राइट. सो दैट्स वाई थिंक टैंक ही इज सेइंग दैट वी आर द मोस्ट हैंडसम रेस. ओके. एंड देन नेक्स्ट ही इज हैविंग वन कंपैरिजन एंड ही इज सेइंग दैट डेफिनेटली वी आर better than earthlings. Why? Because they are having very tiny heads. Okay. Noodle, you keep on exercising your mind and someday you will have a balloon brain just like mine. Okay. Next he is addressing to Noodle and he is saying that Noodle, you just keep on exercising your mind. Okay. So कह रहा है कि तुम भी अपने mind को बहुत ज़्यादा exercise किया करो mind की and then someday you will be able to have a balloon brain just like mine. Okay. So think tank वो अपने brain को क्या कह रहा है? He is referring his brain as a balloon brain. Okay. जो
एग शेप का उसका हेड है उसको वो बलून ब्रेन की तरह रेफर कर रहा है। एंड ही सेइंग कि उसका बलून ब्रेन क्या है, बिकॉज वो अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, उसका बहुत शार्प माइंड है, शार्प ब्रेन है, राइट, और इतना ज़्यादा वो एक्सरसाइज करता है अपने ब्रेन की, दैट्स वाई उसका जो ब्रेन है वो इतना बिग हो गया है। ओके, सो ही इज़ गिविंग वन एडवाइस टू दिस पर्सन नूडल एंड ही सेइंग दैट you have to exercise your mind if you also want to have a balloon brain just like me. Okay, Noodle, oh, I hope so, mighty think tank, I hope so. Okay, so Noodle, he is saying that yes, I just hope that one day I will also able to have a balloon brain just like you. Okay, think tank, now contact the space probe. Okay, so now think tank, now he is ready with this communication. Okay, after consulting the mirror. Okay, now he is ready to establish that communication and now he is ordering to Noodle that contact the space probe. I want to invade that primitive ball of mud called earth before lunch. Okay, so now he is saying that I just want to invade, I just want to attack, or I just want to capture that primitive ball of mud. Primitive मीन्स एंशियंट. ओके, सो वो अर्थ को किस तरह से रेफर कर रहा है, ही इज यूजिंग द वर्ड्स प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड. ओके, फॉर अर्थ बिफोर लंच. ओके, सो वो कह रहा है कि ये जो प्लैनेट अर्थ है जो कि एक्चुअल में क्या है, जो कि बहुत ही एंशियंट बॉल ऑफ मड है, राइट, इसे मैं लंच से पहले ही कैप्चर करना चाहता हूँ. ओके, Noodle, it shall be done, sir. Okay, so one more time Noodle is there just to obey all the orders and in saying that okay sir, it shall be done. Okay, after that he adjusts levers on switchboard. Okay, so we have read earlier that there was one huge switchboard there. So now Noodle, he was adjusting all the different levers that were there on the switchboard. Okay, electronic buzz and beeps are heard as the curtains open. Okay, so finally वो communication establish हो जाता है और जब कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है, राइट, सो स्विच बोर्ड में से बहुत सारी बर्ड्स की साउंड, बीप्स की साउंड आती हैं और फाइनली जो कर्टेन है, नाउ फाइनली द कर्टेन इट ओपन. ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, कम्युनिकेशन कैसे एस्टेब्लिश हो जाता है और ये जो मार्शियन इन्वेंशन है, जो अटैक है, राइट, ये किस तरह से आगे बढ़ता है, क्या इनकी प्लानिंग है. ओके, सो व्हाट इज देयर प्लानिंग. ओके, एंड विल दे सक्सेसफुल इन देयर प्लान, वी विल कम टू नो व्हेन वी विल कंटिन्यू द चैप्टर. So see you in the next video. Thank you.